So if delta H is negative, ये तो easy से था. Those reactions are known as exothermic reactions. And next में उन्होंने पूछा हुआ है कि all chemical reaction involves, तो उसमें which is the closest thing, energy change, because उसमें energy change होती है हमारे पास उसकी, तो वो आ जाएगा. which is not released in anaerobic reactions. तो anaerobic reactions कौन से होते हैं? respiration. respiration को बोलते हैं ना मोस्टली जहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है. Yeah. तो which is not released in anaerobic reaction. तो Lactic एसिड ही acid. है. हाँ, लैक्टिक एसिड इज द ऑड वन आउट इन दैट. बाकी सब चीजें तो होती हैं. पर रेस्पिरेशन प्रोसेस से कार्बन डाइऑक्साइड भी इन्वॉल्व होगी, एनर्जी भी इन्वॉल्व होगी, वाटर भी पॉसिबिलिटी है. नेक्स्ट इज कैटलिस्ट इज कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बाय. तो वो सिर्फ क्या करता है? वो कुछ भी इंक्रीज नहीं करता. ठीक है. कैटलिस्ट रिएक्शन, उसने कैटलिस्ट की डेफिनेशन भी यहाँ पे दी हुई है. इट ओनली माइट भी, ये देखो ना, एनारोबिक में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी तीनों प्रोड्यूस हो रही, लैक्टिक एसिड्स नहीं हो रहे. डज नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज टू इज कॉल्ड एनारोबिक रिस्पिरेशन. ये ऊपर भी उससे एनारोबिक बोला हुआ है या एरोबिक बोला हुआ है? एरोबिक बोला हुआ है. एनारोबिक में लैक्टिक एसिड आता है हमारे पास. कैटलिस्ट में है a substance that accelerated chemical but remains chemically engineered at the end of the वो catalyst provides new mechanism for the reaction with low activation energy. Does the catalyst increase the rate of reaction by lowering its activation energy? Do we have that option? नहीं. So none of these आ जाएगा. It lowers the activation energy. अगर यहाँ पे lowers लिखा हुआ होता ना, we could have gone for this option. Activation energy of a chemical reaction must be lower than the average kinetic energy of the molecule, greater than the average kinetic energy of the reacting molecules. Lower ही आएगा. Because average energy, kinetic energy से लोअर होगा तभी तो वो एक्टिव क्लीन्स हो पाएंगे हमारे पास, इफेक्टिव क्लीन्स सॉरी हो पाएंगे. या तो ग्रेटर होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए. यहाँ पे ना उसकी डेफिनेशन में वो लिखा हुआ है एवरेज काइनेटिक मॉलिक्यूल्स तो लोअर देन है. देन उसने हमें बताया हुआ है कि डिफाइन एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस. एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं? Are the chemical reactions that releases energy usually in the form of heat. और उनकी एंथैल्पी क्या होती है? नेगेटिव होती है. एग्जाम्पल्स में हम उसकी क्या बात कर लेंगे? कंबशन आ जाएगा. एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर द रिएक्शंस दैट absorbs energy. ये why it's not going. Exothermic that release energy, डेल्टा एच नेगेटिव होता है. एंड कंबस्शन उसकी एग्जाम्पल में आ जाएगा. एंडोथर्मिक रिएक्शंस कौन से होते हैं? दैट absorbs energy
delta H is positive and इसकी एग्जांपल में कौन सा आ जाएगा हमारे पास मेल्टिंग ऑफ आइस डिस्कस कर लेते हैं देन हमारे पास नेक्स्ट क्या है define enthalpy of a chemical reaction. How do we define enthalpy of a chemical reaction? Short form में कह सकते हैं no, this is not the right color. We need a darker shade. Okay. Total heat content of a system. For exothermic, it's negative. For endothermic, it's positive. So हम find out कैसे करते हैं? And इसको define करते हैं. It is the sum of internal energy of sum of the internal energy of reactants minus product. कैलकुलेट हम इस तरीके से करते हैं ठीक है ओके what do we have for the next question what is an anaerobic respiration ये हमने अभी अभी पढ़ी किया we just did anaerobic respiration anaerobic थी ना या aerobic थी फिर भूल गया मैं anaerobic respiration एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के साथ जो होगा और इसकी एग्जांपल भी ये साथ में करनी है ठीक है okay next we have define activation energy the minimum amount of energy required for reactants to undergo a chemical reaction I guess वो भी तो start में कहीं पे थी ये ये रहा the minimum amount of energy that initial average kinetic energy particle must have an effective cooling in is called activation energy ये देखो वो वाली उसका भी वो सेक्शन है कि the higher the activation energy the lower the reaction rate तो हमें activation energy को क्या रखना है lower than the average kinetic energy of the particles एमसीक्यू भी वैलिडेट हो गया उसकी थ्योरी यहीं पे दी हुई है देन वी हैव व्हाट इज द रोल ऑफ कैटलिस्ट इन अ केमिकल रिएक्शन क्या होता है श्रीनो The catalyst speeds up a chemical reaction without नॉट being directly स्टॉपिंग involved in it. यस और उसका और का काम होता है इट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी एज वेल मैग्नेटिक रिएक्शन विद द लोअर एक्टिवेशन एनर्जी देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो डिफरेंशिएट बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन तो वो ऊपर उसने दिया हुआ है दोनों difference aerobic respiration is that requires oxygen to break down and why it's not ये दोनों लिख देना विद देयर रिस्पेक्टिव एग्जांपल्स ठीक है and then how can we determine the enthalpy of a reaction I sent it to you.
ओके, लेट मी ट्राई टू बी as close to the one. पहला तो हमारे पास ये आ जाएगा ना, हाउ टू कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी इज बाय subtracting, ये वाला पोर्शन ना, enthalpy in a reaction is the sum of the energies absorbed and released in the bond breaking and bond formation. So enthalpy change is equals to sum of the bond dissociation energies of reactant minus sum of the bond energies of the product. There is another way through which we can calculate that is through the calorimeter. Calorimeter is a device which is used to measure the enthalpy change. Here M is the mass, C is the specific heat capacity, and T is the temperature difference. ठीक है? So calorimeter also help us to find out the, it helps us to find out the heat absorbed or released during a chemical reaction. डेल्टा एच किसको शो कर रहा है? एंथैल्पी चेंज को। एम इज द मास ऑफ द, जो हमारे पास आ रहा है वहां पे प्रोडक्ट का होता है। सी हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, टी इज द टेम्परेचर डिफरेंस होता है। दीज आर टू वेज एज मेंशन इन आवर बुक, उनमें से सिर्फ एक ही है सेफ साइड, दूसरा भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ये उन्होंने साथ में एग्जांपल्स बेशक डिस्कस कर लेना इफ यू कैन मेमोराइज द वैल्यूज। H2 plus I2 is 2HI, उनमें से बॉन्ड एंथैल्पी 436 ऑफ हाइड्रोजन and bond energy of iodine is 151। ये रिएक्टेंट से इनको ऐड कर दिया, माइनस प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में क्या आ रहा था? एच आई। सो 2 into HI की बॉन्ड एनर्जी कितनी है? 299, एंड इट इज मेंशन इन द क्वेश्चन एज वेल। तो आप बस ये एग्जांपल देख के, डोंट पुट द वैल्यूज, जस्ट जस्ट शो इट बाय द इक्वेशन के ऐसे करना है उसके अंदर। ओके, Okay. देन उन्होंने बोला हुआ है हमसे डायग्राम एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस कौन सी होती है हमारे पास? एक्सोथर्मिक की डायग्राम कैसे होती है? रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट, एक्टिवेशन एनर्जी, ट्रांजिशन स्टेट, एंड ये क्या होती है? एंथैल्पी। यहाँ पे क्या आता है? रिएक्टेंट्स, यहाँ पे क्या आते हैं? प्रोडक्ट्स। एंडोथर्मिक में क्या होता है? ये प्रोडक्ट होते हैं, ये रिएक्टेंट्स होते हैं, दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी, this is the enthalpy change, delta H. And if you want to see a neater version of that, so वो बना हुआ है ये, उन्होंने ऐसे एक्सोथर्मिक कैसे बना के दिया हुआ है, आई गेस एंडोथर्मिक का नहीं बना के दिया हुआ। हाँ, नहीं बना के दिया। एंडोथर्मिक में प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होती है ना, इसी इसी के ऊपर अगर हम लोग बना देना, इट वुड बी लाइक दिस, प्रोडक्ट ऊपर आएगा, रिएक्टेंट, बाकी सब चीजें वही रहेंगी एज शोन। ये जो हम पे, दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी, ये एंथैल्पी चेंज को शो कर रहा है और ट्रांजिशन स्टेट को शो कर रहा है। देन वी हैव, ओके, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया।
कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। अच्छा, कैसे करेंगे जल्दी से बताओ। एच की कितनी है? 436। सीएल की कितनी है? 243। माइनस प्रोडक्ट की कितनी है? एचसीएल की कितनी है? 432। इनको ऐड करो और माइनस करो 432 में से, आई गेस नेगेटिव आंसर ही आएगा। Wait, don't we multiply 432 by 2? हाँ, 432 को 2 से मल्टीप्लाई करना, सॉरी। थैंक यू। तो उसकी बैलेंस इक्वेशन बनेगी H2 प्लस Cl2 gives 2HCl। यस, 430 को 2 से मल्टीप्लाई करना। बट आंसर we're getting Minus 185. -185. That's mean it's Yeah. an exothermic Ex reaction. Kilojoules per mole। देन अगला तो एक थ्योरी है कि जस्टिफाई द स्टेटमेंट द प्रोसेस इज क्रूशियल, सॉरी, प्रोसेस रेस्पिरेशन इज क्यों क्रूशियल है। लेट्स डिस्कस। रेस्पिरेशन हमें क्या करता है? हेल्प्स अस टू एब्जॉर्ब ऑक्सीजन, रिक्वायर्स ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन। नहीं, बट उसकी डिस्कशन हुई है। ये respiration is a biochemical process in which energy is released from food in a biological system. During this process, glucose is oxidized in the body of living organisms and releases energy. And that energy is utilized by us for everyday work. फिर हम उसको दो टाइप्स में वो कर देंगे। बस जो एडिशनल पॉइंट्स है उसमें हम लोग ये लिख सकते हैं, इट हेल्प्स अस टू रिमूव CO2, therefore balancing of gases in the blood and tissues। और energy obviously very required for everyday work। I guess this was the last question. Yes.